why Bangladesh is one of the first choices for Nepali student in terms of MBBS. So the first reason would be language and traveling. So language, Bengali is pretty much easier for Nepali student than any other language like Chinese or Filipino or whatnot, because both Bengali and Nepali language came from the same origin. আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं नेपाली स्टूडेंट के हवाले से कि ये बात की जाती है वाई नेपाली स्टूडेंट चॉइस बांग्लादेश फॉर MBBS, के नेपाल के लोगों के लिए पहली चॉइस बांग्लादेश क्यों है MBBS डॉक्टर बनने के लिए। तो आज लड़की ने जवाब दिया कि बांग्लादेशी क्यों नेपाली स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर चॉइस है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी Guys, welcome to Medic August. This is Pooja, and in today's video I am going to talk about why Bangladesh is one of the first choices for Nepali student in terms of MBBS. So the first reason would be language and traveling. So language, Bengali is pretty much easier for Nepali student than any other language like Chinese or Filipino or whatnot, because both Bengali and Nepali language came from the same origin, that is Sanskrit, and a lot of words are actually similar or sound the same, and also the speeches are pretty much similar. So it is very much easier to learn Bengali over other languages in other foreign countries. So that's bang on. And then another advantage of studying in Bangladesh is traveling and transportation. So you can travel pretty much by all means if you are in Bangladesh to travel to Nepal, or vice versa. Number one being air, yes, and then number second being by road, and by road through vehicles or train or whatnot. So it depends on the location that you are in Bangladesh as well as in Nepal. So depending on that, you have pretty much a lot of options in order to travel. So I think that is even one of the very good consideration. So fees, Bangladesh is cheaper than in Nepal in terms of fees. Nepal claims about 45 to 49 lakhs, I think, from the recent update, and Bangladesh is also similar, 40 to 45 lakhs. I think there's not much difference in terms of the fees, but I believe extra fees in Nepal ranges from 10 to 15 lakhs, but in Bangladesh it's not going to be so. You just have to pay the exact amount of fee. You may have to pay certain amount of money, which is less comparatively for every exam you give. I mean, every board exam that you give, and other than that I think you don't have to pay anything. But of course you have to maintain your lifestyle and all of that, and I believe lifestyle in Bangladesh is much more cheaper than in Nepal. But then as a foreign student you travel a lot, so you have to keep that in consideration as well. Yeah. So MBBS in Bangladesh is very systematic, right? There are about 100 medical colleges in Bangladesh, 30 government, 70 private. So in MBBS in Bangladesh has become this compact version where everything is so systematic, from items to cards to term to prof, everything is very systematic. So one lecture that you do counts, because you have to give item of that particular chapter that you have been given lecture on, and then you have a card exam, and then you have a term exam. So and then the topics inside the item, the topics inside the card, term, everything is very compact in Bangladesh, and you are literally aid. The teachers here are so helpful. It's like they are teaching a kid. They literally teach you like a kid. They are so caring, so they will literally call you out from the hostel to attend the classes. This happened to us in first year. One day we were all thinking, okay, we'll take auto, and we were just sleeping, and then
we were banged in our hostel rooms doors and we were called to the class back. So you know what I mean. So there's no chance of skipping classes without any valid reason. So you are literally cared like a child, and I think that is really good. This one, I'm not gonna just talk about Bangladesh, but in general, is that you become so much independent. And I must tell this, that independence is nothing to do with your ability to earn, but like, trust me, it has nothing to do with that. So you become so much independent when you are all alone in a country and you don't have any blood relationship here. It's like you become independent, bro. You become independent. And I think it's very important to learn as in young adults that we are, when we join MBBS, to learn about independence, to get into the real world and see how people are in this real world, and get ready for future. I think the main point of coming to colleges is to get ready for the future, to get ready for what's the whole drill is about life, and to get a head start. And I think being away from family and home kind of automatically brings that in you. And another thing, of course, is NMC registration. NMC registration rate is pretty high from Bangladesh, so I think that is also one of the biggest concern. So if you are doing MBBS, you need to get an NMC registration, and if Bangladesh has high rate of NMC registration passing rate, so why not? तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि ट्रैवलिंग के हवाले से देखा जाए तो नेपाल के बांग्लादेश बहुत ज़्यादा करीब है। फीस के हवाले से देखा जाए तो नेपाल से कम फीस है बांग्लादेश के अंदर। अगर वहाँ पर हॉस्टल की बात की जाए, अगर वहाँ पर कॉलेजेस की बात की जाए, तो तकरीबन 100 के करीब वहाँ पर कॉलेजेस हैं जो बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर बनने के लिए हैं, MBBS करने के लिए हैं। जो 30 के करीब हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 70 के करीब प्राइवेट हैं। इसलिए नेपालियों को बहुत ही ज़्यादा इजी है बांग्लादेश में MBBS करना, और नेपाली और बंगाली ज़बान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्ड्स एक जैसे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर नेपाली स्टूडेंट को कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा है, उसके बाद कॉलेजेस का निज़ाम अच्छा है, हॉस्टल का निज़ाम बहुत बेहतर है, और आपको वहाँ पर नेपाली फूड्स भी मिल जाएंगे। चाइनीज़ ज़बान और फ़िलिपीनी ज़बान से बेहतर बांग्लादेश की ज़बान है, क्योंकि यहाँ पर ईजी होता है नेपाली स्टूडेंट के लिए। और साथ ही साथ आज़ादी के हवाले से बांग्लादेश के अंदर हर रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी हासिल है और पूरी तरह से आज़ाद हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग करते हैं अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर नेपाली स्टूडेंट के लिए एजुकेशन हासिल करना ज़्यादा बेहतर है चाइना और फ़िलिपीन के बजाय। बांग्लादेश के अंदर ट्रैवलिंग आसान है, वहाँ पर लैंग्वेज का मसला नहीं है, एजुकेशन बहुत आसान है, और उसके बाद अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अपना MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।